Hey folks, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to Pol Ke Pol. Today's episode, I'm going to talk about why movie theaters are failing, why Bollywood is failing across the country and also internationally, I would go on to say. Recently, there was this report I read on Economic Times, which said that new malls that are coming up, they're reducing the space that is allocated to movie theaters, right? Your INOX, PVR, and everything, which is quite crazy because they are like earlier we used to get around 9% or so of our revenue from movies, which was pretty stable. Everyone knew, there's going to be like a Friday ritual sort of a thing for people of all ages and class and categories to come, especially to multiplexes. Now it's like, boss, we don't even get 6-7% of our revenue from movie theaters. The average occupancy used to be somewhere around 30-35% annual occupancy for a movie theater. Today it has fallen down to 20s, 25-27%. I'll link that article in the description, but what it shows is in the last 5 years, especially since the pandemic, what has happened is people have realized that basically these are numbers, right? This is not opinion. My opinion will come later. uh, the numbers prove that movies are not doing well. Average collection has fallen down year on year for Bollywood. Especially in 2024 it has fallen down even further, and there are many reasons for it. And when average collection obviously falls down for movies, because movie theaters are not what they once used to be, because simply because of the rise of OTT, right? Because that's what many people say. That's what many people, even that article suggested, right? Because of the rise of OTT platforms like Netflix, Prime, and Hotstar, and all of that, Geo Cinema, whatever. Um, the challenge is now that what the argument is that if you have these OTTs, right, why the hell would you go to a movie theater? Because going to a movie theater is no longer cheap. Earlier, you could go to a movie theater and come back like really happy, satisfied, having a nice time, 500 rupees. Today, you go per person, by the way. Today, you go, there's no way you come back without 1500 per person ka bill. Okay? No way. And I'm not even talking about those luxury seats and insignia and all of that. No, not even close. I'm not even talking about IMAX and all, where the tickets start at 11 like 1000 or 1500 or so. एक आदमी का ticket, right? So the prices have gone up, and for some reason, all these movie theater companies are suffering. In fact, PVR and Inox literally had a merger. They had to do a merger to survive. COVID was a big hit for these people, no doubt about it. But there's one thing which people aren't talking about, which I think is pretty, it's not obvious, but if you think about it, is the truth, and which is the actual pol ke bol over here. Why movies are not really working in the theaters is simply because, yes, I agree, theaters have become like a premium experience, but movies are no longer giving us what they once used to give. A movie used to have content that was compelling, an experience that was compelling, and especially Bollywood movies, they have been pretty crap lately. And OTTs not only gave us like convenience ki okay, just take your phone out or go on your TV, just watch something. The cost of TVs has fallen spectacularly. For 25-30,000 rupees, you're gonna get a home theater wala TV, itna bada TV, ठीक है? When I was growing up, people who only rich people had big TVs, okay? Most of us had CRT monitor TVs, okay? And वो एकदम basic था. And anyone who had a big TV was like, wow, rich man. Today, you will get a 55 inch का MI का टीवी for like 28,000. तुम ऐसा सेल वेल में लोगे ना, 25,000 में आ जाएगा MI का टीवी. I have friends who earn like very well, and उनके घर पे MI का टीवी है. So it's not even that, oh, it's a सस्ता brand or like something which is like looked down upon. No, MI का very very decent. Of course, you might have to change it every 2 years, but anyway, what else are we not changing every 2 years nowadays, right? So the cost of TVs going down is definitely a correlation with the cost of with the popularity of the movie going experience going down in India, right? That is one major factor. Also, the content, which I believe is the real reason. The content is crap. I think the formula is the same.
They get some, and they keep on catering to frankly the rural audience, the town audience, not to the city audience. I mean, you can't be watching, Breaking Bad, and can't be watching shows like Narcos, and someone wants you to watch Singham. Like, I get it. Like, most people are like, oh, no, no, Singham is Singham, Narcos is Narcos. There is no comparison. I agree, there is no comparison. But for how long are we going to suffer that disrespect? Ki, you know what? Oh, अपना दिमाग घर पे छोड़ के आ जाओ. मैं दिमाग घर पे छोड़ना है तो मैं बॉडी भी घर पे छोड़ेगा ना भाई. मैं दिमागी गाय को घर पे छोड़ू, मैं अपना पैसा भी घर पे छोड़ेगा, मैं तेरे को पैसा भी दूँ, मैं तेरा टाइम भी दूँ, बॉडी भी दूँ, बट यू वांट मी टू कीप माई ब्रेन एट होम. क्यों करूँ मैं ये सब? Why should I do it? No, you honestly tell me, why should I do it? There are many reasons, okay, why this has gone down. Of course, like the pandemic played a role. That's number one. Number two is, as I discussed, like, the cost of TVs has gone down, cost of home theaters has gone down. मेरे पास 7,000 रुपए का बोट का just like sound bar है with woofer, like Bluetooth woofer. That, I'll be very frank, like people are gonna sneer at me. By the way, I bought my father like a Sony ka home theater system a couple of years ago, 2-3 years ago. Fantastic, right? वो भी 5.1 वाला, like fantastic. एंड मैंने ये 7,000 का बोट वाला लिया है. मैं मजाक नहीं कर रहा. लाइक देर इज अ डिफरेंस, नो डाउट अबाउट इट. लाइक सोनी इज सोनी, बट हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इज इट? एंड इफ आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड आई जस्ट वांट टू वॉच अ गुड डिसेंट मूवी, 7,000 का बोट का साउंड बार में चल रहा है ब्रो. ऑनेस्टली 27,000 का मेरा माई सैमसंग का टीवी, 27,000 रुपए का. इट इज़ फकिंग फैंटास्टिक. Okay, it is like 48 inches, God knows how many inches, but yeah, less than 50 inches, 45-50 inches का है. sexy है. मैं the next TV I'm gonna get is gonna be 55-60 inches का, सीधा बड़ा वाला टीवी लेने वाला हूँ. ये बड़ा टीवी लेने वाला हूँ. सोनी ब्राविया वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है अभी तो. Maybe I'll stick to Samsung, right? But you see, and even if I do that, I won't be spending more than 35,000. 37,000, so which is very manageable. If anyone knows the actual cost of TVs back then, when I was growing up, a good TV, a big TV like the rich man TV was 1 lakh, 1.5 lakhs, and it was fancy, but it was very inconvenient and all. अभी तो आपके पास proper LED TV आया है, ठीक है, 55 इंच का, लगा दो साउंड बार उस पर, पागल हो जाओगे आप. अब पागल हो जाओगे, फुल मूवी वाला सेटिंग आता है. मैं मूवी थिएटर में आता हूँ. लेट मी कम टू द थर्ड रीजन. Our crowd, and any crowd, it's not just India, okay, let's be frank, because you go and you go on Twitter, you go on Instagram, you speak to anyone, people don't know how to behave in crowded places, in public places anymore. They just don't, and there's no one to stamp their authority in a public place where you're like, भाई मैंने लिटरली मतलब 2,000 रुपए दिए है टिकट्स के लिए, मेरे और मेरी वाइफ के लिए. कोई पागल औरत कहीं झगड़ा कर रही है किसी आदमी के साथ वहाँ पे, कोई बंदा फ़ोन पे बैठा है मेरे नीचे वाले रो में, किसी को फ़ोन उठा के बात कर रहा है अपने बेटे से, कोई मतलब क्या कर रहे हो यार, कोई खांसे जा रहा है पूरा टाइम. व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? किसी ने अपना पॉपकॉर्न गिरा दिया है, कोई ऐसा सुर 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 करके वो बंदा कोई पेप्सी पी रहा है. मैं बोला यार, थोड़ा चाय की तरह क्यों पेप्सी पी रहा है यार, वो क्या कर रहे हो? आई मीन, you can't even say anything, and some people think they are so smart. मतलब as usual in India, पैसा आ गया, क्लास नहीं. वो कोई कमेंट पास कर रहा है वो इस पे, हाँ हाँ, they think they are so funny, like the people who have made this movie for hundreds of crores, they think that is not enough and they should be adding their commentary. So हाँ हाँ, अरे कोई देख भी नहीं रहा है भाई, अंधेरा होता है थिएटर में, no one's even looking at you. So this person, whoever, like there will always be some weirdo, who's doing this, passing comments, and this and that, and ha ha ha. I mean, वो बोल के ही गुस्सा आ रहा है मेरे को. And we have all felt this, we have all suffered through this, and we'll continue to suffer, frankly, because our people don't know how to behave, and nobody knows how to behave. What our people? For this time, for once, I'll defend my people, right? I would say, फिर भी मल्टीप्लेक्स में तो लाइक यू एक्सपेक्ट अ डिसेंट क्राउड, बट यू नेवर नो, बिकॉज समवन विल फाइट कि अरे मेरा सीट ये है, मेरा सीट वो है. कोई भी कुछ भी करेगा, किसी का भी झगड़ा हो जाता है. एवरी मंथ देयर विल बी वन वीडियो ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ वायरल, वेस अ कपल इज आर्ग्यूइंग इन द थिएटर. कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड पीपल, I don't know, man. Like, I think we are very angry, like as a people, we are very angry. मूवी थिएटर में एसी चल रहा है, जोर जोर का आवाज़ आ रहा है, डॉल्बी एटमॉस, वो बोलता रहता है 50 बार, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी एटमॉस. एंड
इट इज लाइक, एंड पीवीआर 17 बार बोल रहा है कि पीवीआर पीवीआर, अरे मेरे को पता है पीवीआर है भाई, मैंने 2,000 रुपया दिया तेरे को, चुप बैठना। क्यों, क्या मार्केटिंग कर रहा है? मेरे को दो ही तो कंपनी है जो थिएटर है इधर इस देश में, उसमें भी तुम वो पीवीआर, नहीं सुनने का है मेरे को तेरा पीवीआर। वो आईनॉक्स का अलग चालू है उसका, वो उसका आइडेंटिटी क्राइसिस है, आधे लोग को लगता है वो आईमैक्स है, आधे लोग क्या, मतलब आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट्स अप विद दीस पीपल। मैं बैठता हूँ, आई ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल, आई वेंट टू वॉच द मूवी स्त्री 2, बढ़िया एकदम, हाँ स्त्री 2 चालू है, अभी स्टार्ट होगा 7 बजे मैं पहुंचा, बोले कि स्टार्ट होगा 7 बजे का है। एवरीवन नोज इट नेवर स्टार्ट्स एट 7, राइट भाई, 7:10 पे स्टार्ट होगा, नेशनल एंथम होगा एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा ऐड वैड आएगा। 7:30 को स्टार्ट हुआ, and they played trailers as usual before it started, which is obvious, right? Trailer, that's great. You know which trailer they played before Stree 2? Stree 2, आधा मूवी दिख गया मेरे को बस उसमें, मैं बोला भाई मैं, एंड यू कांट इवन डू दिस, एंड आई लिटरली डिड दिस, आई डिड दिस, वो डॉल्बी एटमॉस, वो जो भी एटमॉस, मतलब वो कान में घुस गया, लाइक देयर इज नो वे आई कैन डू दिस फॉर 2 मिनट्स, दैट ट्रेलर इज फॉर 1.5 2 मिनट्स, इट जस्ट गोज ऑन, लंबा ट्रेलर, टीजर भी नहीं, ट्रेलर डाल दिया उसने। अरे भाई यही मूवी देख रहा, कोई दिमाग लगा रहा है क्या वहां पे? मैं 700 रुपए का तुमको टिकट खरीद रहा हूँ पर पर्सन, एंड यू कांट एम्प्लॉय पीपल हु हैव द कॉमन सेंस टू नॉट फकिंग प्ले स्त्री 2 का ट्रेलर बिफोर स्त्री 2। तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस इज दिस? लाइक व्हाई डू यू डिसरिस्पेक्ट अस सो मच? मुझे ना, मतलब honestly no other industry I feel has such unprofessionalism as these people. Okay, in general I think there is very little professionalism over there. And let me tell you something, the people over there, the staff who works over there, handing out those 3D glasses, giving you the popcorn, coke दे रहा है, Mountain Dew दे रहा है, कोई को सैंडविच दे रहा है, कैपेचिनो दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, जो भी beverages and all, कोई साफ सफाई कर रहा था, janitors over there, the security guards over there, these people, I have realized one thing. Firstly, I have a lot of respect for these people, right? It's their job is not easy. In general, I'll be very frank, I have a soft corner for blue collar people because it's not easy, especially in India where it's like, at least outside India, it's like, oh, you're blue collar, theek hai, blue collar. But in India, it is blue collar, thu. It is that, like, chi, blue collar. We have that attitude. We do not respect people who don't work in air conditioned environments. um, we have that, we just have that, and there is no dignity of labor in this country, which is going to really bite us, by the way, and it's already biting us because most people, we don't have enough white collar jobs. We'll never be able to produce enough white collar jobs unless there is a revolution in terms of how we do work around with our economy, and revolutions are not always pretty, and let's not have them, please. Our country is not built for them. Let's focus on incremental growth, वही होने वाला है अपने साथ, let's be frank. God knows how I got in from movies to economic policy, but here we are. Blue collar people, they have to deal with all these people, all the kachara of the human race who enter Inox and PVR. And let me tell you something, they're never smiling. They're never smiling. And another thing about the movie experience, when you try to enter a movie theater, I swear to God, I've entered like these 5-star clubs, okay? जहाँ पे like cover charges की, सर आपका cover charges 4,000 रुपया, ओके। ना यू बी लाइक, 5-स्टार क्लब में इतना नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, प्लस तेरा शक्ल लेके के कोई एंट्री नहीं देगा। भाई मेरे लिए 5 स्टार है, वो महंगा है, वो ठीक है, 4,000 रुपये वो कवर चार्ज ले रहा पर पर्सन, इतना मतलब ज़्यादा हो गया। एंड आई वेंट आउट देयर एंड द सिक्योरिटी चेक हैजंट बीन एज डिमीनिंग एज इट इज़ व्हेन यू गो टू आइनॉक्स। ये चॉकलेट लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? इमली 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 लेके जा, तो क्या लेके जा रहा है? ये इधर क्या है आपका, इधर क्या है, दिखाओ इधर क्या है। मेरा मॉल के एंट्री में चेकिंग हो रहा है, मेरा अंदर जाते टाइम चेक हो रहा है, बाद में मैं मूवी थिएटर में कभी वंस तो आई गॉट चेक, थ्राइस थ्राइस आई गॉट चेक। हम लाइक, क्या कर रहे हो तुम लोग? बोलते इधर क्या आपका, मतलब चाबी है, मैं घर जाएगा वापस, नहीं सोना है मेरे को इधर तेरे यहाँ पे, मला नाही झोप येणार इकडं, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? लाइक स्टॉप इट। आई मीन, कोई चिप्स का पैकेट लेके आए क्या? अरे क्यों नहीं लेके आएगा, मतलब मैं तो नहीं लेके आया, बट वो कॉलेज का जो जाता है बंदा, वो क्यों नहीं लेके आएगा छुपा छुपा के चिप्स का पैकेट, या कोक में कुछ मिक्स करके लेके आएगा, वो पानी का बॉटल एंड ऑल? व्हाई विल दे नॉट डू इट?
आई एम नॉट कंडोनिंग इट, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यार। 600 रुपए का पॉपकॉर्न बेच रहे हो तुम, आधा टाइम कैरमल पॉपकॉर्न नहीं होता तुम लोग के पास। यू गाइज आर पथेटिक। You guys, and oh, which reminds me, another thing. Every time there is interval, there is one guy arguing and fighting and threatening to beat the crap out of the dude selling popcorn or sandwich or whatever. Every time I go to a movie experience, I see someone absolutely losing their marbles. एंड अंडरस्टाफ्ड होते हैं ये लोग, एक बंदा या दो बंदे होते हैं मैक्सिमम, 15 लोग का लाइन लग जाता है, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ मेस यार। यार इतना पैसा देके इतना घटिया सर्विस, I would say only movie theaters in India can give. Like, frankly, I have realized one thing. I've never been in movie theaters outside of India, but from what I hear, they are not doing well either. Just by the way. But let's see. मतलब I honestly want to experience कि बाहर जाके movie देखना क्या होता है, because I've not heard good things over there either, but I want to see that contrast, right? I genuinely want to see that contrast कि, और ऐसा एक बार नहीं देखना है, 2 3 4 बार देखना है, अलग अलग टाइम पे देखना है। I want to see for myself कि क्या होता है, मूवी देखना एक एक्सपीरियंस क्या होता है। बिकॉज हमारे यहाँ पे तो आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। लाइक, डू पीपल जस्ट गेट आउट ऑफ their houses over there just to fight and argue over there, just like our people do seemingly at a movie theater? Like, I genuinely want to find out. I genuinely want to find out. I'm not even going to go into the fact that some people have this very bright idea of bringing their 4-year-old or a 2-year-old in the movie theater, and that kid is obviously going to do what the kid is supposed to do. It is crying the entire time. वो पूरा टाइम बच्चा रो रहा है, पूरा टाइम बच्चा रो रहा है। मैं भी रोता यार, मुझे अगर स्त्री 2 के पहले स्त्री 2 का ट्रेलर दिखाते तो मैं बच्चा होता, मैं भी रोता। बट एनीवे, कमिंग बैक, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड ऑनेस्टली या कमिंग बैक अगेन, लाइक, आप सच्ची में बताओ कि आप जब मूवी देखने जाते हो, डू यू रियली नो दैट यू आर गोना कम बैक विथ योर माइंड ब्लोन? नॉट रियली। समटाइम्स इट फील्स, अरे जाने के लिए जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं जा रहे। लाइक, आई विल गो टू मूवी थिएटर वंस एवरी 3 months or 6 months, ऑनेस्टली। वो भी मैं बॉलीवुड मूवीज में आई विल गो इफ दे आर लाइक, हे स्त्री 2 स्त्री 1 वाज गुड, पुष्पा 2 पुष्पा 1 वाज गुड, यू नो। वो अगर कुछ, या फिर इट्स लाइक, अरे पठान के बारे में बहुत सुना है, चलो जाके पठान देखते हैं, समथिंग लाइक इट्स SRK, दोज रूल्स डोंट अप्लाई टू हिम। Coming to probably my last point, there are no longer stars. We no longer have stars. Nobody has an aura. I mean, we don't have superstars. Definitely, we don't have superstars. कि ये इसकी मूवी आई है, जाके तो देखना ही पड़ेगा। I mean, of course, you have the Khans, but Akshay Kumar is just putting out one movie every 2 months. Like, वो आदमी क्वार्टरली मूवी डालता है, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है भाई। कौन सा EMI है आपके सिर पे? आप क्वार्टरली मूवी काय को डाल रहे हो? And the new stars, they are just like, and at some point Bollywood has to accept, I don't know when will they accept it, after the industry is done for, that nepotism is genuinely affecting the output of the industry and the outlook of the industry. Not just the output, but also the outlook of the industry. Nepotism is genuinely playing a role. Like, we genuinely need new stars to come in to do new things, and theaters will keep losing, Bollywood will keep losing, until you really honestly try and serve the urban middle class a little bit more. Please don't tell me आप घर पे रख के आओ दिमाग, मेरे को, मैं फिर घर पे ही बैठेगा ब्रो। मैं 1 महीना वेट करेगा, 2 महीना वेट करेगा, तेरा फालतू मूवी आ जाएगा Amazon प्राइम पे, तेरा फालतू मूवी आ जाएगा Amazon प्राइम पे। I'm being very frank, right? Like, if you want me to keep my brain at home, I'll also keep my wallet at home. I don't want to watch your shitty movie. Make compelling stuff, make urban stuff, yeah, make real stuff, okay, make relatable stuff also ना, थोड़ा सा करो ना। एक वो हेरा फेरी आया, उसके बाद क्या मतलब, honestly tell me, barring Stree, tell me one genuinely funny movie. Like, this movie is like a movie which came out in recent times, which is like, I am here to be funny and I'm going to be funny. Tell me one movie which is like reached a status which is like, wow, everyone loves it.
There was a period, like, let's be honest, it was the Priyadarshini period where it was like, okay, you had Hera Fairy, Dhamal, and Gupchup, and or some, I'm forgetting, not Gupchup, whatever, some Halchal and all of that, right? अभी कहाँ है हाउसफुल 6 7? अरे क्या फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है तुम लोग का, क्या चल रहा है? How long are you going to come up with these crappy movies? When are you going to respect me? I feel disrespected. The movie theater experience is crap. Bottom line. I'm going to end this by just saying that please be sensible. Okay. लिमिट, आई एम नॉट, सी पॉपकॉर्न का प्राइस कम नहीं होगा, एक्सेप्टेड, बट आप आधे घंटे का ट्रेलर एंड वो पीरियड नहीं रख सकते उसके बीच में. यू आर लाइक, इफ यू आर गोइंग टू टेल मी ओके द मूवी स्टार्ट्स एट 7, 7:10 तक को स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई. मेरे को लायरा लायरा अब नहीं करने का है मेरे को लायरा. आई मैं लायरा नहीं देखने का है मेरे को. विको वज्रदंती नहीं वापरने का है मेरे को. व्हेन आर दे गोइंग टू गेट इट? ये सीएसआर है क्या? तुमको कोई उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि वो लायरा लायरा करके विको वज्रदंती करके आलिया भट्ट को लेके आए वो लोग विको वज्रदंती करने को? वो, I mean, I don't know, man. Like, it's very irritating. Respect me, and probably I'll come back to a movie theater and temper your temper your prices a bit. Honestly, you can charge me on the food, but ticket prices honestly need to be chilled out. And मैं आपको धंधा करना नहीं सिखाऊंगा, but as a, वो तो आपको आता ही है ना, आपको तो सब आता है. But as a consumer and a movie lover, let's do that, let's get. And oh, by the way, I mean, fuck, I forgot this. What is going to happen when Mark Zuckerberg genuinely, gets that escape velocity on his virtual reality and augmented reality dreams? You have no clue. You are in a world of pain when virtual reality and augmented reality really make the mark which we thought it would have made like 5 years, 7 years ago, which it hasn't by now, but it will very soon. In the next 2 3 years, you are going to find वर्चुअल रियलिटी में जब स्पोर्ट्स अरीनाज वगैरह जब वो स्ट्रीमिंग वीमिंग होगा ना, पीपल आर लाइक, नहीं देखने का मेरे को मूवी. गेमिंग वेमिंग जो आ रहा है वर्चुअल रियलिटी में, पीपल, अ स्टोरी इज अ स्टोरी, मूवी इज जस्ट अ vehicle for it. Video games are going to eat you alive, or at least interactive stories are going to eat you alive. चल, not video games. जब आएगा ना वर्चुअल रियलिटी वाला, ओके, वो डायरेक्ट टू वर्चुअल रियलिटी, वो डायरेक्ट टू टीवी बोलता है ना, तो वैसा डायरेक्ट टू डिवाइस आने वाला है वो आपका मूवी. आई विल नॉट नीड to come to a movie theater to get the movie theater experience. You guys will be in a world of trouble when that happens. You know why people come to movie theaters? It's also a community experience. Think about it. You guys are better than me. Think about it. You guys are industry experts. If you're watching, any one of you, make it a community experience. Make it a sanitized experience without all the kachra that keeps happening all the time. Okay? I want to come back to movie theaters with full gusto. Once a month तो मूवी जाना ही है मुझको, बट मैं नहीं करूँगा अभी वो. आप थोड़ा इम्प्रूव करो आपका ये. Anyway, that's enough. That was a rant, I just realized. But I loved recording this episode. That's all from me for this Pol Ke Bol. Do let me know what you think about movie theaters. Was I right? Was I over exaggerating? Was I exaggerating things? Is there any point I missed out? And what are your thoughts on this? Yeah, that's about it. Thank you. टेक केयर. ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो ना, कब से मैं ऐसा 80 सब्सक्राइबर्स पे 100 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को. करो करो.